Screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So the topic of today's discussion is neoplasia. Firstly, we discuss what is neoplasia. Whenever there is a term of neo mean it is new. Plasia mean cell growth या growth pattern. It means कि आपको सेल की ग्रोथ मिलेगी लेकिन उस ग्रोथ का पैटर्न आपका डिफरेंट होगा या चेंज होगा. दिस इज कॉल्ड नियोप्लेजिया. इसको आप नियोप्लेजिया कहते हैं. न्यू ग्रोथ आपको किसी भी जगह पे मिल रही है, पैटर्न भी चेंज हो सकता है, नंबर भी चेंज हो सकता है. दिस इज नियोप्लेजिया. सबसे पहले नियोप्लेजिया को समझने के लिए आपने ये सारी टर्मिनोलॉजी समझनी है जो हमने पहले इससे डिस्कस की हुई है. जर्नल पैथोलॉजी के टॉपिक के अंदर ये पॉइंट सारे मैंने आपको बताए थे. ठीक है. व्हाट इज द सेलुलर चेंजेस, या आप कहते हैं कि पैथोलॉजी में जब नियोप्लेजिया होता है तो उससे पहले प्रिकर्सर आपके पास कौन कौन सी इंजरीज आपको मिलती हैं, और उसके बाद दैट वुड बी some are irreversible and some are reversible. अगर तो वो रिवर्सिबल हैं तो दे आर लीस्ट लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू नियोप्लेजिया. बट इफ दीज चेंजेस आर irreversible, for example anaplasia, dysplasia, they would be likely to be converted into neoplasia. हाइपरप्लेजिया क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है, एट्रोफी क्या है, डिस्प्लेजिया क्या है, मेटाप्लेजिया. नियोप्लेजिया क्या होता है? दिस इज अनकंट्रोल्ड colonal proliferation of cell. It can be benign or it can be malignant. For understanding of all these terminologies, I have a picture which I show you. Is it visible? नो मैम, जस्ट न्यू प्लीज बुक वाला पेज आ रहा है. Okay. Is it visible now? Yes. Okay. So when we talk about the adaptive changes or cellular changes to the cell injury, so there are various types of adaptations जो आपके सेल जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा एज अ रिस्पॉन्स ऑफ इंजरी. फॉर एग्जाम्पल जब आपका सेल्स नॉर्मल है या आपका टिश्यू नॉर्मल है तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के सेल नजर आ रहे हैं. These 4 types of cells are round to oval with the central purplish nuclei, and sometimes there is the organelles present in it. Here it is shown in green color. So number one is that कि आपको यहाँ पे normal structure नजर आ रहे हैं, and this normal structure is normal cells. If there is hypertrophy, तो hypertrophy को हम define करते हैं कि there is increase in the mass or increase in the weight of that tissue or individual cell. Cell या cluster of cell or group of cell which is called as tissue, when there is increase in the mass of that tissue, it would be hypertrophy. If there is decrease in the mass of the same tissue, that is atrophy. Atrophy का मतलब है decrease or absent of trophic factor या trophic changes. So this is atrophy. But when we talk about hyperplasia, so hyperplasia, the name indicate that hyper mean increase, plasia mean number. You are looking that here is increase in the number of cells, ultimately lead to increase in the tissue mass or tissue size. This is hyperplasia. The actual change in hyperplasia is increase in the number. For example, the actual number of cell is 1, 2 and 3, 4. Here the number is 1, 2, 3, 4. There are 16 cells present over here. So it is hyperplasia. When there is the term hypertrophy or hyperplasia, it means hypertrophy again means that there is increase in the number of muscle mass or tissue mass, increase हो गया, और hyperplasia का मतलब है number increase हो गया. If both are present at the same time, it means actual number is 1, 2, 3, 4. Here is the number is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Number is also increased and the cell size is also increased. So both changes are present at the same time, that is hypertrophy and hyperplasia. This is common feature in which type of organ? Hypertrophy and hyperplasia combine किस में हो रहा होता है?
Uterus. Yes, it is in uterus during the state of pregnancy. This is occurring at the same time, hypertrophy and hyperplasia, and it is normal physiological response in pregnancy. What is metaplasia? Meta mean change, plasia mean सेल का नंबर और सेल ग्रोथ पैटर्न चेंज आपको मिलता है. दिस इज मेटाप्लास्टिक चेंज और मेटाप्लेजिया. इट मींस एक्चुअली द सेल्स आर राउंडेड एंड द नंबर ऑफ सेल इज 1 2 3 4. मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है आपको कि वन सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप और दे मे बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ दैट सेल. The cells are rounded, and here the cells are no more rounded. They become irregular in shape or they may be squamous in shape. So there is change in epithelium. Rounded to squamous भी आप कह सकते हैं, rounded to irregular भी आप कह सकते हैं. So metaplasia means there is change in the lining epithelium. So these are the general terminologies which you will appreciate at different levels in the neoplasia. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, we are coming back to our points. That is neoplasia. Firstly, there is a definition of neoplasia: uncontrolled colonal proliferation of cell which can be benign or malignant. Colonal means same copies, एक ही तरह के आपको सारे सेल नजर आएंगे, but it is uncontrolled due to absence of apoptosis. Loss of apoptosis हो जाती है, uncontrolled cell division हो जाती है, पीछे कंट्रोल सेंटर खत्म हो जाता है, it lead to tumor formation. Hyperplasia mean increase in the number of cells, that may be endometrial hyperplasia. Hypertrophy mean size increase हो जाता है. Atrophy mean there is decrease in the tissue mass due to decrease in the size as well as number. Dysplasia, here it is not compulsory that this number may be decreased. It may be remain same, but the size is decreased. Dysplasia, disordered no non neoplastic growth होती है. इसमें मैंने आपको बताया था कि dysplasia mean disordered. Dis stand for disordered. So there is disordered growth pattern. For example, carcinoma in situ जो होता है उसके अंदर basement membrane के साथ intact आपके structures रहते हैं, and that is called dysplasia, and it may be reversible. Similarly, metaplasia, change of epithelial lining. One cell type is replaced by another type and another cell type. It may be due to any stress factor, due to any stimulus. Whenever there is removal of that stimulus, normal epithelium अपनी actual जो normal थी उसमें change आ जाता है और वो अपनी revert हो जाती है. It is again reversible. Barrett's esophagus है esophageal, it can lead to esophageal adenocarcinoma. Then anaplasia, A stand for absence, plasia mean there is no cell differentiation. So complete lack of differentiation of cell in the malignant neoplasm. It is called as anaplasia. Then comes to differentiation. What is mean by this differentiation? The degree to which the malignant tumor resembles to its original tissue. For example, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि वो कितने डिग्री तक आपको अपना अग्रेसिवनेस शो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूमर वेल डिफ्रेंशिएटेड है, इसका मतलब है उसके अंदर सेल बहुत अच्छी तरह आपको नजर आ रहे हैं, तो वो लेस अग्रेसिव होगा और वो ऐसे ही आपको लगेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे बिनाइन है. पुअरली डिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअली आपको सेल नजर आ रहे हैं ट्यूमर सेल, दे आर ऑफन एग्रेसिव और इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, दे आर मोस्टली हाई ग्रेड ट्यूमर्स, or well differentiated they are low grade tumors. So there is a difference between well differentiated and low differentiation, and differentiation means how these cells resemble to their original cells or normal cells. So this is all about the adaptive changes of the cells in response to neoplasia. What is neoplasia and what are these terminologies? Now comes to the next topic, that is tumor suppressor gene. Firstly, there is a concept that what is tumor suppressor. Literal meaning इसका क्या बताता है? Those genes or cells, these genes which causes the suppression of a tumor. It means कि इन्होंने ट्यूमर को खत्म कर देना है. They are called tumor suppressor gene. Now again I am sharing another image.
Is it visible to you? Yes, ma'am. Okay. Now, what is the concept of this tumor suppressor gene and oncogenes? This is the normal cell. If the normal cell is affected by tumor suppressor gene or oncogene, what will happen? नॉर्मल सेल पे जब आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्ट करता है तो ये आपके ट्यूमर को सप्रेस कर देता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका ये नॉर्मल सेल था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल. व्हेन this conversion is possible, this conversion or this change is possible only when there is increased level of oncogene and decreased level of tumor suppressor gene. It means oncogene is directly proportional to carcinoma and tumor suppressor gene is inversely proportional to carcinoma development. ऑन्कोजीन नेम बता रहा है कि इसने ऑन्कोजेनेसिस करनी है, इसने ट्यूमर फॉर्मेशन करनी है. तो ऑन्कोजीन का जब लेवल इंक्रीज होगा तो वहां पे कैंसर डेवलप हो जाएगा. लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन का लेवल अगर ज्यादा है, इट मींस कि ट्यूमर सप्रेसर जीन अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो आपके पास कैंसर नहीं होगा. बट वेन एवर देर इज सप्रेशन ऑफ दिस ट्यूमर सप्रेसर जीन, कोई ऊपर चेंज आता है, म्यूटेशन होती है, वो इस ट्यूमर, अगर यहाँ पे इसकी आ गई म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल ये हो गया म्यूटेटेड. अब ट्यूमर सप्रेसर जीन ने ट्यूमर को करना था सप्रेस, तो ये क्या करेगा, ये इसको सप्रेस नहीं करेगा, यहाँ पे इसकी म्यूटेशन होगी, ये अपना फंक्शन नहीं कर सकता, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, यहाँ पे कैंसर बन जाएगा. तो एक्चुअली याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि ऑन्कोजीन का फंक्शन जब इंक्रीज होगा तो कैंसर डेवलप होगा, ऑन्कोजीन का फंक्शन जब डिप्रेस्ड होगा या म्यूटेटेड होगा तो कैंसर डेवलप होगा. सो ऑन्कोजीन का रिलेशन क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड whenever we talk tumor suppressor gene तो it is inversely proportional to the development of cancer. So दो टर्मिनोलॉजीज आ गई आपके पास, ट्यूमर सप्रेसर जीन का क्या है और ऑन्कोजीन का क्या है. हमने अब जो बात करनी है वी टॉक अबाउट द ट्यूमर सप्रेसर जीन के ट्यूमर सप्रेसर जीन ने कैसे काम करना है. ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस कर रहे होते हैं ट्यूमर को. इट मींस कि क्या होता है कि जब कैंसर बना होता है तो इसमें ये डीएनए मिथाइलेशन कर देते हैं. नॉर्मल डीएनए जो है उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है. जब डीएनए की मॉडिफिकेशन होती है, डीएनए ने नॉर्मली क्या करना था, सेल डिवीजन होनी थी, सेल साइकिल चलना था. डीएनए की जब डिवीजन होनी थी तो उसके अंदर उसमें आपके पास मल्टीपल जो है वो ट्यूमर बनने थे. जब उसकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, आपके पास ट्यूमर बनता है. जब उसकी मिथाइलेशन होगी तो दैट मिथाइलेशन will lead to survival of that DNA. When the DNA is survived, there is no cell division or there is uncontrolled abnormal cell division which lead to cancer. So ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, नॉर्मली कंट्रोल करते हैं आपके सेल साइकिल को. whenever there is loss of function or there is mutation, it will result in increase in cancer. As I told in the diagram, both alleles must be mutated before the cancer occur. अब इस जीन के, ट्यूमर सप्रेसर जीन के दोनों अलील्स जो है वो म्यूटेटेड होने चाहिए तो आपके पास कैंसर की डेवलपमेंट होगी. तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, या आप कह सकते हैं डिक्रीज हो गया लेवल या म्यूटेशन हो गई है. दीज थ्री टर्म्स आर द सेम, लॉस ऑफ फंक्शन, म्यूटेशन और absence of tumor suppressor gene or decreased level of tumor suppressor gene, it will lead to cancer. There are multiple examples of these tumor suppressor gene we talk about in our next meeting. So you people are allowed to join the next link.